हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में आपके सामने बिल्ड करने वाला हूँ मैं नया गेमिंग पीसी जिसका बजट है अराउंड 70,000 रुपीज़, जिसमें आप गेमिंग, एडिटिंग और स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो के बीच में मैं आपको जितो भी आप स्पेक्स देख रहे हैं वन बाय वन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट डिटेल बताऊंगा इंस्टॉल करने से पहले। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले।
दोस्तों आरजीबी फैन तो हमने इंस्टॉल कर दिए, अब हम कैबिनेट को थोड़ा कलरफुल बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये ब्लू कलर की स्ट्रिप यूज करी है, जो अक्सर आपने देखी होगी जो लोग दिवाली के टाइम पे यूज करते हैं। तो चलिए इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस हमारा सीपीयू बनके रेडी हो चुका है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि इसका नाइट लुक में कैसा दिखने वाला है ये। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों जैसा कि आपने देखा मैंने कैसे गेमिंग पीसी बिल्ड किया आपके सामने। ये वीडियो मैंने डिटेल में इसलिए बनाया है ताकि आप इजीली इसको खुद से भी असेंबल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में दुकानदार आपसे 1000 से 2000 रुपये चार्ज करते हैं ये असेंबल करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप पे आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं मदरबोर्ड को, ग्राफिक्स कार्ड के, जो आप मॉडल के नाम से उनकी वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, करना मुझे जरूर बताइएगा। डाउट या क्वेरीज में आप मुझे बिंदास होकर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको मैं हेल्प वहाँ पे जरूर करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बने रहिए मेरे चैनल में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।